Good afternoon. क्या हो गया गुड बाय लग रहा है वेरी ड्राई नॉट विशिंग मी बैक टू लेक्चर्स डन ना क्यों ऐसा मरा हुआ पांडा की तरह बैठा यू स्लेप्ट क्यों क्यों भाई क्या रीजन है Tell me, what was the chapter? Come. Where you walking that side, man? What was that? What is it? She went to her home without telling anyone. Who's that? She. Masa, that your friend, huh? I saw her on the radio. You? Ah. I saw her. फिर मैं उसको देख के लगा ये लड़की कहाँ देखते हैं? हिंदी से कर लो. Tell. We are in chapter number 3. 2 is completed, ना? हाँ completed है ना? He doesn't know. I'll tell you. Look here. Chapter number 2 का last chapter क्या था? Lines of longitude किया? Eastern and Western come. We have done that international date line also. Wait. I ना बोलो. Great या small circle? लोकेटिंग का न्यूमेरिकल है वो बाद में करता हूँ मैं ठीक है it is new date new setup and new class rotation and revolution also we have started 3 hours हाँ तो अच्छा है ना चलो we'll put this rotation and revolution everyone have brought the fair volume What is the volume? क्यों भाई? Volume 2 ही है geography. हाँ. Volume 1 नहीं है. Volume 2 ही है. Geography is volume 2. Volume 1 नहीं मिला. क्यों उसको बात करने देना? क्या हो गया तुझे बीच बीच में? धक्के लड़के गिरना वाले बैठे थे. इनकी मुझे तो लग रहा है मुर्गी. इधर आ जाना दोनों. Why you don't want to sit here? You come here first bench. Now come my dear. What's the name? You go that side. We'll pull you. Yeah. Okay. What we will do? There are 2 lectures. We will not only finish this chapter, but also notes will be given, but in a very simplest, wherever you want to sit. And then I will go to chapter number 4 as well. Next, biology lecture हुआ ना राहुल सर का? हाँ sir. So why you are so dry? The track. What kind of costume is this? ये सब ठीक है. ये पैर में क्या है? Rocks. Looks as if the open mouth of a dead rat. No sir. Okay. Let's understand this. Is it something new? Yes. No. Okay. है ना? Absolutely clear? Yes. When we try to understand. No, sir. To be precise, 365.25. Malum. I knew what are you coming to. है ना? ये बोल ये क्या होता है? ये लोग ढूंढ रहे हैं. See, चुपचाप. M for Mercury, V for Venus, E for Earth. Because I say, okay. If I tell you what is rotation, everyone understand that Earth rotates on its own axis. Yes. Is the axis straight? Yeah. Earth's axis is straight. No. And then round. Tilted. What is the degree of tilt? 9. 23.5. Oh, good. Where is mine? वही है. वो तो gravity पानी डालना है. पानी look है वो. और उसके साथ और भी कुछ है.
And look here, if I show you Earth, the tilt is like this. है ना? If I want to show you the tilt, ये मेरा straight है. ये जो भी है, हाँ? ये जो angle है ना, this is 23.5 or I'll take 20. Either rotation or revolution, Earth will go round or on its own in this shape only. So we say it is the duration of what? Hello. Duration of the spinning of Earth on its mean position. Day and night. All thanks to this tilt. We will be doing some new words. Perigee. Perigee. Apogee. What is that? I always make it very simple. The word perigee, apogee, we say it is that position of the Earth and it is revoluting, where it is farthest from the sun. You know how easy to not to mess up. And perigee, it is that position of the Earth during revolution which is closest to the sun. Entire 9 syllabus gives some goosebumps for you guys. What is that? No choice. And all the chapters compulsory. And all the questions are compulsory. But 10th, I was taking two lectures for both CBSE and ICSE. So I was saying for ICSE, you have a lot of choices. Out of 8, only 5 modules there. अभी हम लोग बोर्ड में बोलना पड़ेगा कि 9th में भी नहीं वो फोन बंद है. So we have to say whatever modules are given, your exams are not like board exams. Internal है ना, and it is easy. But थोड़ा कुछ chapters है जो काफी बड़ा है. जैसे आपका last chapter आएगा natural regions of the world, which is, but I put it in a this one system, give them videos and perfectly हो जाता है. अभी ये बताओ. Thank you. कुछ मस्का तो नहीं चल रहा भाई. हाँ. कभी-कभी genuinely तारीफ करता है. Look at. So whenever we see sun, earth, and then I say moon. क्या specialty है moon का with that of earth? Tides. नहीं, what is the specialty of the moon to the earth? Natural light and natural तो नहीं होती है natural. Satellite. Is any other planet having a satellite of its own? Yes. Mars. क्या है नाम क्या? 2 moons. With satellite. यार but अर्थ के लिए एक ही मून है, तो मार्स के लिए 10 भी देना, हमको क्या लेना देना? किधर है सैटेलाइट? कुछ भी कहाँ है? वो याद नहीं. Then better don't tell. Okay sir. So we will be studying rotation. So how do you define the word rotation? Rotation is the movement of the earth on its own axis, which takes 24 hours for one complete rotation. How do you define revolution? The time taken by Earth to take. वो तो time ना, meaning बोलो. The movement of Earth on its own axis, making a full circle. Very good. Completing a full circle. तो revolution का meaning गुजरा, revolving बोलेगा तो. तो revolve क्या होता है? Revolution होता है. Oh, wait, boy, enough I say. Yes sir. ये बोला किसी ने? हाँ मैं बोला. नहीं बोला. In its own orbit, which is 365 days, 6 hours for 1 year, which is yes. And if I multiply it by 4 years, this will give me 24 hours. Instead of 366, it becomes 65, 366. And it is easy to find out in your calendar when your calendar shows 29th of February. Sir, when was the last leap year? I think 2000, if I'm not sure. 24. 24. 2020 में leap year था.
तुझे मालूम है तो फिर तुम मुझे बता। सर कंफर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, एवरी 4 years अभी अगर हम देखेंगे तो इसमें दिख जाएगा। ओके सर। But so what is in store for you this chapter? We will not only understand the meaning and importance, we'll be studying in depth. If no rotation, no days and night, and if there is no tilt, all will be equal. जो हमको नहीं है. Sir, Then we will be we'll be studying two things. One will be studying solstice, है ना? Then we'll be studying equinoxes. So now only be prepared that here we are going to have a lot of diagrams. तो पहला diagram पहला start करें या last diagram पहला start करें? पहला, हाँ, मैं videos भी दिखाऊंगा, don't worry. I know that my small Maharaj is very tired looking. Neither I am energetic है, मैं भी 7:30 से हूँ, but keep looking at you guys. ये diagram पहला है, चलो draw करो. ये देखो, ये टिल्ट दिखा है 23.5 डिग्री, ये आके 66.5, ये हमारा इक्वेटर, ये नॉर्थ एंड साउथ. पेंसिल I will cancel if it is on the pen. Mr. B, boy. Yes sir, this one. हाँ, put the heading first. Rotation, revolution, day. This is that substance called gold. What? We don't know. What got it up? Sir, मैंने सुना. Not for children. Boy. That's GSUs. उसके साथ होते हैं. अच्छा. That is, you can also have. This is very good. सर वो यहाँ से थोड़ा उसमें ये मुझे ना हो क्या बोल उसको इसमें डाल दो. माय डियर भैया, ये जो कॉन्सेंट्रेट है ना, अगर इसमें मिक्स होगा तो फिर ठीक है. इसके साथ मैंने जिंजर और लेमन का कॉन्सेंट्रेट भी ऐड तो पी सकते. तू नहीं सही तो कैसे तो लव तो इसका 2-3 अगर टुकड़ा डालेगा ना, इट विल मोर लाइक आइसक्रीम ऐसा बाउल में आता है. And this is very good for the growing. Are you seeing that small that yellow one? That's right. अभी वो पूरा ऐसा कौन करकेगा? तो साउथ इंडियन वर्ड है. नहीं, all Indian word है, universal word है, कौन करकेगा? Ouch. सर क्या होना है? Diagram volume. अरे वो पहला डायग्राम. क्या? वॉल्यूम में है डायग्राम, दिखा भी दिया और उसने स्टार्ट भी कर दिया. ये चांद बन के बैठा है. In biology, who was not there? He was not there. Everyone. No, everyone. I didn't see him there. इसको देख. कोने में छुप के बैठा है. सर, आपने वीडियो में देखा? मेरा खुद का लेक्चर चल रहा है, मैं तुझे क्यों बैठ के फिर क्लास में आई. यार अंदर बाहर मूवमेंट तो ठीक है. चलो तो बना. According to you, which is the hardest chapter to us to learn? That's what we do. But I'll make it so simple, you'll ask. ये भी ना थोड़ा चैप्टर का लेंथ मतलब कंटेंट की तरह था. बच्चा पिछले 1 महीने से मेरे साथ है, कभी बात करते सुना आपको, कभी बात करके सुना? हाँ सर. ऐसे ही रहेगा. really like आदित्य नहीं बात क्या नाम बता रहा? Part. Part. Yes sir. महाभारत में हाँ श्री कृष्ण पार्ट. सर आपने पहले दिन में पूछा था. बोला था.
Your schools are completely shut down. Yes, sir. Mock drill वगैरह हुआ थे? नहीं, पाकिस्तान में हुआ। वो तो mock drill नहीं, वो mouth drill था। India भी very smart भाई, that mock drill कर रहा उधर मार रहा। बोल रहा ये लोग मार के नहीं कर रहे तो। But आज एक बड़ा story। हाँ, आज क्या कहता है? Feeling ये। तो उसको मालूम पड़ेगा कि yesterday वो अफगानिस्तान का डांस और गाना देखने का। अच्छी देव डांसिंग। वाह वाह है वाह तमाशा मारेगा। हिंदी बात नहीं करना है बट हिंदी सब। उन्होंने उनके मिसाइल लॉन्चर्स को भी डैमेज कर दिया है इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के जो मिसाइल लॉन्चर्स उनका तो पहले वर्ष हमारा रेडार ने हमारा इसको पकड़ा ही नहीं रेडार क्या चल पकड़ लिए उन लोगों ने फाइटर प्लेन्स भेजे थे रैप्टर 670 और इधर का लोग अभी तक लोग ने भेजा नहीं है वैसे भेजा है एक या दो भेजे थे हाँ चार के मारे hey जल्दी करो I have to finish this chapter सर हो गया बस नोटेशंस की तरह 66 करो ये बहुत फनी है ना पेरिजी एंड अपोजी हाउ डू यू रिमेंबर पेरिजी में देखो ए है अपोजी अपोजी मतलब अवे फ्रॉम द सन पेरिजी क्लोजर टू द सन आपने उत्तरायण और दक्षिणायन सुना है there are two positions where we say are earth and the sun उसी को हम लोग ये इंग्लिश में पेरिजी नाम देते हैं पेरिजी मुझे पेरिजी से याद नहीं वैसा मत प्लेन ऑफ then we have solstice एक अलग है solstice ऊपर जो समर रहेगा और नीचे आएगा विंटर देखो डायग्राम भी है और लवली वीडियो भी है चलो डायग्राम देखिए दिस डायग्राम ऑन पेज नंबर 29 मूवी डाल अभी नहीं दिख रहा पेरिजी दिखा उसमें कोई ऑनलाइन क्लास स्प्रिंग पेज नंबर 29 इसमें वो अपने ही है अरे वो रिकॉर्डिंग listen did you see spring equinoxes exactly down autumn but then we see summer हाँ yes summer solstice and winter solstice solstice का मतलब ही क्या है day is of 12 hours night is of 12 hours yes exact तो कौन सा डे के तरफ देखो 21 December 2022 तो मैं एग्जाम में स्टूडेंट्स को कैसे याद रखने बोलता हूँ जो लेफ्ट साइड है 21 राइट साइड है 22 इधर जून लिखो तो दिसंबर अभी वो चलो इक्विनॉक्स में आ जा इधर भी डेट डिफरेंट सो इजी ऊपर आके 21 नीचे आके 23 उधर आके मार्च नीचे आके सितंबर भूल जाएगा ये सब मैं सिखाऊंगा आपको ये ज्यादा सब एक से नमूने मतलब अच्छे अच्छे बच्चे बनते हैं चलो राइट डाउन इंडियन नोटबुक रोटेशन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस today we got the lovely sweets from our department yes sir I know how do you know Chandra के दिए I registered programs so maybe like next year you guys also should get it तो ये साल का बैच फिर next year आपका ये देखा look 100% ease अभी से आपका फोटो मुझे दे दो मैं इधर रख देता हूँ ऐसा नहीं चलेगा तो है ना ये सोच रहा है फोटो निकालूं या प्रिंट मार के दे दूं अभी इस वजह तो तेरा प्रिंट डाल के मार सकता हूँ चीटिंग हो जाएगा ना पार्क जाके मैं टेबल में चेक कर लूं ये लो सर rotation refers to spinning
of the earth on its tilted axis. Second point, continue for us. Earth rotates west to east. Next point. For one complete rotation. How much time? 24 hours. Actually 24 hours भी ये नहीं है मालूम है ना? कितना hours है actually? If I am not so wrong, 23 hours 43 minutes something seconds. कुल मिला के फिर उसको 24 बोलते हैं. अभी देखो, when I am saying rotation, it is not taking independently. It is also doing rotation and it is also doing revolution. Will you be able to do that work in your life? कौन सा काम साथ में करता है? हाँ, सब कुछ. एक काम तो था. It's like you are studying and you are watching the TV. Not possible. Not possible. Not possible. I am eating, watching the TV. Absolutely. I am messaging and daddy watching. हमेशा होता है. है ना? I am sleeping and I am dreaming. And dream and then acting to be sleeping. So, dream में आएगा. And when your parents try to wake you up for your school, that is a comedy of you and tragedy of your mother. Understood it. Good job. And we always believe कि क्या है sir every day. So Sunday के दिन देखो, the mother neither come nor you want to sleep. तुरंत हाँ सही है. And then vacation time you are just eagerly awaiting. Vacation 10 दिन के पहले से बच्चा रेडी हो रहा है. Vacation शुरू और vacation का सिर्फ 2 दिन आपको लगता है कि vacation. इसलिए जो तो बोरिंग है सर. रोज पेपर पर कपड़ा देखना है ना. हमारे इनके साथ रहना पड़ता है. मतलब वरना आज का एक उधर सर बच्चे को सब फ्रेंड्स के साथ इतना मस्ती होता है. तो क्या करेंगे? All what I was explaining about rotation. हो रहा है. तीनों को क्या रोटेशन ना? मुझे अकेले भी रोटेशन सुनाई दे. चलो सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. Rotation of the earth directly means the duration of day and night are determined with its angle. It's not like a common. Forecast earth and the speed. Because I don't know whether if you visit a place called Nehru's Science Center. Yes, Worli mein. Thank you. Thank you. Medical. मतलब they will tell you, not tell you, they will literally show you certain documents which will show the origin of the earth. शायद आपको मैंने पहले लेक्चर में दिखाया था ना, first time 8 billion years से start हुआ, फिर 6.5, फिर 5, फिर अभी क्या 250 million ना, अभी 150 million में हम जी रहे हैं. तो आगे जाके कितना मिलियन होगा? और 50 million पे खत्म हो जाएगा. सही है. क्या कहता है? सब रखते हैं. फिर आओ. सोलर सिस्टम डिस्पर्स हो जाएगा. तो रुकना है. 150 million years तो रुकने वाला है. 50 बिलियन. तो रुकने वाले हैं. नहीं बता. पर ये वर्क तो हो जाएगा. आपने पीछे जो हो रहा है.
मैं एक समाज में ऑर्गेनाइज हूँ, मतलब अभी तो नहीं जा रहा हूँ, तो पिछले कितने सालों से एक ही बोलते हैं, दुनिया खत्म हो गया। हाँ ऐसे ही तो होने वाला है। कलीग के बाद अंत होने वाला है, हर जगह घटने वाला है। ऐसा नहीं कि वो लोग रॉन्ग बोलते हैं, to certain extent, I mean nobody wanted that India Pakistan अभी वो भी बट अच्छा हुआ, अच्छा शांत बैठा है, शांत नहीं है, शांत भी है सब। ठीक है देखते हैं। तो ये रोटेशन का I feel only one thing. Sir, did you hear that news from Donald Trump? His speech. Right? He said that whatever India Pakistan do, it's okay, but when Pakistan attacks India, he would give the answer. Forward. For India. So much thanks. India की जगह पे वो answer देगा. Good, good. Thank you. Yes, sir. Also, not only Britain, not only US, Britain is there, Russia. Saudi is there, Russia is Russia. there. If And you Russia know- is there, it's enough. No, you know what good thing India has done after attacking this? अपना जो external minister है ना, Mr. S. Jaishankar, he has briefed the heading, मतलब the leaders of these 5-6 countries. कि हम लोग ने कितना मारा, किधर मारा और क्यों मारा. So at least they are happy कि India is transparently telling everything. ऐसा नहीं कि इनके तरफ टूरिस्ट का आईडी देख के मारा है ना. That is the worst thing Pakistan has done. Actually उसका 2 दिन पहले उनका जो मिलिट्री जनरल है, And our reply was correct. Absolutely right, correct क्या है. Operation और Sindoor. अपना कांग्रेस पार्टी अभी प्रूफ नहीं मांगेगा. 2:45 बजे दिवाली हो गई क्या? रात को सूर्य झुक गया. अभी उधर का लोग भी वीडियो लेके अपलोड कर रहा है. And the strategy for common people of Pakistan, but ठीक है चलेगा. On the whole internet of Pakistan is being trolled. Really? Yes. Yeah. Maximum. What I was saying, चलो आगे बढ़ते हैं. Characteristic. शॉर्ट शॉर्ट दूंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आधा घंटे में. अपना पहला लेक्चर कैसा है? 3 to 4:50. No sir. 2:45 to आज तो 5 बजे छुट्टी है. कौन बोला तेरे? उससे आप मुंह मत लगा, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा. So you need an opportunity. Today is what, 9th ना और 8th. 9th. हम 9th. No, say. Stop what I'm saying. Wait. Today is Thursday. Friday. मेरे पास उधर थोड़ा महीना लगता है ना. 350 के आसपास. 245 to 450. अपना पहला कुछ. 450. हाँ. 450. And दूसरा लेक्चर 15. हाँ. And दूसरा लेक्चर is 4:30 to 6. Yes. Okay. 5 बजे. यार मुझे लोग 11 बजे चला माफी. So we always believe this rotation has to be determined not by the planet of the earth, but by the universe, and there are various forces which acting on it. So whether you believe that God is there or not there, but one thing is for sure, ये जो planets है या जो orbits है वो कुछ नहीं है. If there is any force which is holding the space or earth, what happens? I still understand why doing like this to a friend or my guest is very popular in America. Only during the COVID. And बहुत सारे लोग भी ये करने में बहुत तकलीफ हो रहा था क्योंकि उनको आदत नहीं है. But you know why does an Indian does it? Because I feel that God is hidden in you. हम लोग ये morning, ये hey, hi, वो सब नहीं है. And even touching the feet of a person shows that I am humble to you. Yes.
You will see an American or an English fellow touching, huh? है ना? Because oh man, American man, वो lady है। हो जाता है। उसमें चश्मा नहीं करता। तो फिर आप मेरा स्टूडेंट रोटेशन एक्सप्लेन करता है कुछ नहीं सर आप करा ना सर घूम फिर के उधर ही आता तो ये क्या रोटेशन है सर फिर से हमको ये देखता है रेवोल्यूशन सर ऐसे घूमते घूमते आपको भी घूम के आ जाता है सर ठीक है सर ये रेवोल्यूशन है सर सर आपसे ही सीखा आपसे सीखा अरे कचरा तो कर रहा है फिर मेरा नाम तो जोड़ मैंने ऐसे नहीं सीखा मतलब ऐसे ही था ठीक है थोड़ा सा मैंने अपना कलर डाल दिया क्या थोड़ा ये थोड़ा नहीं भाई पूरा ही डाल दिया हाँ ठीक है ना सर आपने बोला इम्प्रोवाइज करो मैंने पूरा ही इम्प्रोवाइज कर दिया you know what is improvisation yes. अपना चेंजेस डाल ये तो फिर भी ठीक है मैंने यूज्ड टू करेक्ट द पेपर्स मेरा ही नोट्स मेरे पास इतना गंदा तरीके से रिटर्न आता है मतलब ये मेरा आंसर नहीं है और बुक में आपने यही दिया है नहीं मार्क्स को अपील मत करो मैं इतना तो जाबी तरह एक्ट नहीं करता don't know notebook नहीं चाहिए I will read this answer to the whole class है ना क्यों सर अरे तेरा फ्रेंड्स को भी तो सुनने दे तुम्हें क्या आंसर लिखा है नहीं ऐसा कुछ नहीं सर आप मार्क्स काट सकते हैं अरे रुक जा पढ़ लेता हूँ नहीं सर आपस में किया सर अरे रुक जा पूरा क्लास को मार्क्स नहीं चाहिए छोड़ो अल्टीमेटली वो मान गए पर कैसा माना वही बोलते हैं हम लोग we have to very sweetly लात मारने का है ना उसका इंस्ट्रूमेंट इतना स्वीटली करने का तब तो उसको पता लगा सर ना सर 2 दिन के पहले कुछ बोला ना सर ने बोला सर तो तेरा ओपन ही इंसल्ट कर रहा था तो हंसा सर ये क्या कर लिया सर मैं कुछ नहीं सर कभी अपनी कुछ बात हो रहा था क्या मतलब हो रहा था सर तेरा इंसल्ट हो गया तो वो क्या very carefully watching आपने पर तो नहीं आंसर पक्का ना क्या नहीं तो इसको हम लोग ज्योग्राफी में रोटेशन बोलते हैं तो चलो अभी रेवोल्यूशन घुमा के लाते हैं वो क्या है ना सर रेवोल्यूशन क्या बोला सर मतलब जो भी है बोल दो फिर मैं रिप्लाई करूंगा so along with the movement on its own axis the earth has to go round the sun if it doesn't go around the sun छोड़ो ना नहीं रहा तो छोड़ो अब बोला अरे बुद्धू सीजन्स नहीं मिलेगा मुझे तो एक ही सीजन पसंद मतलब तो समर सीजन वो भी मार्च टू मई जब छुट्टी रहता है ना और आप लोग हमको यूटी में बुला लेते हैं तो we say there is summer there is winter हाँ winter भी अच्छा है सर क्यों सर nights are longer बोला कितना लॉन्ग चाहिए 22 hours का नाइट रख लेते हैं मतलब फिर 2 दिन रखिए मैं क्यों 2 घंटे फिर उनके नाश्ता वास्ता नहीं करने का मतलब फिर सो जाने का सर नाइट हो गया ना मतलब फिर से उठने का सर ये बुद्धू सर ये तो मुझे नॉर्वे जाना था चलेगा ना कितना लगता है सर मैं जाऊंगा मतलब 6 महीना रहा ये तो कुछ अलग स्टोरी सुना रहा है हाँ एग्जैक्टली इज वन ऑफ द एंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नहीं है मैकडॉनल्ड्स में the revolution the entire earth is revoluting but due to the rotation that part of the earth which is facing the sun completely will have the day opposite part of the earth which is not facing the earth will have the sun will have the night since it is inclined definitely days and night length will be never be the same फिर हम लोग ने 2 डे बोला है तो कौन सा डे है equinoxes what is the meaning of the equinoxes equal day and equal night सर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नाइट लॉन्ग रहेगा आई विल एक्सेप्ट डे लॉन्ग नहीं चाहिए you go to countries like Singapore the days and nights are very quick because it's on the equator more or less and every day you will get rain अच्छा and
Out of 6 days or 7 days, you get 5 to 6 days heavy rain. No. क्यों? मैं सिंगापुर में एक 8-9 दिन रह चुका हूँ, एक दिन बारिश नहीं हुई। क्यों आ रहे? 5 साल नहीं, 4.5 साल रह चुके हैं। अभी बोल किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है? नहीं सर, बट जिस हिसाब से आप बोल रहे हो हर 5 दिन, उस हिसाब से उधर गया नहीं, मैं तो उस हिसाब से उधर रह रहा था, जिस हिसाब से दुनिया का था सब हिसाब से नहीं था। समझा मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ? सब बड़ा होगा। अभी तो उस हिसाब से मत जा। किधर रह रहा था? टूरिज्म में सर क्या? इसलिए नहीं, मेरे रिश्तेदार का शिपा से चला। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट नंबर 1, the earth completes one rotation W dash E. What is W dash E? West to east. W dash E होगा ये east to west. West to east, right? On its axis, अभी इधर है तो वही लेंगे. 23 hours, 56 minutes, and 4.09 seconds. 56 minutes, 4.09 seconds. अब लेकर चलो 20 hours है ना? Second one. so somewhat it is 3.9, इसका max का दिमाग क्या है? बोलिए. 3.1, 56 minutes है. 24 नहीं होगा। देखो 4.09 3 point, अरे बोल रहे हैं 3.5, 24 hours 20 minutes हो गए. no sir, 3.55, तो 24 hours 22 minutes हो जाएगा. सर 3 मिनट 55 सेकंड, क्यों अपना दिमाग का बुरा बात है? तब देखना दिमाग का थोड़ा और next one. Earth's axis is tilted in the same direction. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ट्रैक में डालो कोई स्टार. Well, it will happen. And every teacher tells that so vibration consider का बहन. And it moves around the sun. देखो, I'll tell you. It will be here. I say this is sun and earth. ये third orbit है. तो समझो ऐसा है tilted. This is yes. This is E. है ना? When it is revoluting, ये जो tilt है वो ऐसे ही रहेगा. ऐसे नहीं कि इधर आके tilt ऐसा हो जाए. Understood? और इधर जाने के बाद the tilt ऐसा हो जाए. The tilt will be in the same direction. उसी के साथ वो revolute करता है. आती नहीं. So that is the reason we have a perfect inclination. Inclination of how many degree? 23 and a half degrees. चलो वही है वो point. Third point. While rotating or during rotating. during rotation. During rotation. Thank you for the information knowledge. Its speed is 1660 km/h. 166. 0 km/h. तो लिख के रखते हैं, दिमाग बाद में यूज करेंगे. आता है इक्वेटर. अब टेल मी वन थिंग, इक्वेटर में अगर 1660 किलोमीटर का स्पीड से घूम रहा है, तो यू एंड मी व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग? ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चीजें दूर जाती है. सेंट्रीपेटल. अच्छा, where are you and me living on the earth? India.
So, and certain students told me that we are living Northern inside here. hemisphere. Not possible. Northern Inside the- hemisphere. On Then we are saying on the earth. uh, It is the crust where you and me are living. on the crust. So when an object rotates very fast, I think एक पहले एक पुराना एक डॉल रहता था जो मिडिल में रहता था and उसके वो सर्कल जैसा कुछ रहता था and there is a piston like it. And you push that piston, na, that circle will rotate very fast. When it rotates very fast, you see that doll which is inside that. When Earth is rotating, all the substances are observed inside the center of the Earth. That is centripetal. And there is an opposite force which pushes the substance which are inside to the outside. That is centripetal. The first one is centrifugal. So when you and me want to fly, we don't do any misadventure of jumping from the. सर आप खुद हो सर मैं देखूंगा आपको पहले मैं नहीं बोलूंगा नहीं सर आप बहुत लेक्चर में उठते रहते हो means whether the object is thrown from the up or from the ground ultimately उसको नीचे ही आना है Isaac Newton's gravity. Like yesterday I was explaining in another class where I said sir, it could have been an Indian who must have slept under an apple tree. Like, तो ऐसे क्यों? उसी की वजह से इतना लॉस पड़ना और मैं लॉस में है. और it could have been Indian. What will happen? कुछ नहीं सर. apple करें. इधर. अरे लोग. नारियल का पेड़ की हाँ, ये इसके सर पे नीचे. एक तो तेरा सर फूट जाएगा नहीं फूटा तो एटलीस्ट तो नारियल को खा भी नहीं सकते तोड़ के ये आइजैक न्यूटन नंबर 3 है इतने साल से पढ़ा हुआ ऐसा एग्जांपल किसी ने नहीं नारियल का पेड़ की नीचे सो गया मेरा उल्टा है मजा है पूरा साइंस कैंसर क्यों क्योंकि वो खुद ही नहीं रहता तो फिर ग्रेविटी क्या उधर ही उसका ग्रेवियट बन जाता कैंसर there was I don't know whether I think COVID का second या first wave का मुझे याद नहीं है. One lady in Chembur, Tilaknagar area went for a jogging, and early morning था, and since it was heavy rain and this one नारियल का पेड़ fell on her head only. मुझे सब बोल and madam jogging करते करते निकल गए हैं. सर नारियल का पेड़ भी नारियल का पेड़ गिरा उसके सर. तो नारियल का से जरा बच के so we always believe ये जो speed है ना when you go towards north pole and south pole what will happen the speed becomes less whereas only at the center that is equator to Cancer and Capricorn the speed is max. Now tell me the reason why. Tell me the reason. To maintain the the entire mass, the weight of the earth is in the center only. याद है हमने पहले चैप्टर में बोला था when it is going towards the poles it is tapering. Tapering का मतलब क्या thin हो रहा है? मतलब सीखा ऑब्लेट स्फेरॉइड. बट इन गरीब बच्चों को कैसे सकते? तो क्या तेरा बोर्ड में जाके लिखेगा उसका स्पेलिंग? हाँ. करेक्ट. यस. अगर एक भी अल्फाबेट मिस हुआ ना भाई. हाँ सर. तो लेडीज वॉशरूम में वॉशरूम. सर इतना कॉन्फिडेंस तो है. Just kidding. चलो write down. Confidence level. Yes, sir. Did you write 16? No. Whereas 16 kilometers. Yes. And the equator. Whereas its speed decreases towards the poles. Huh? The ending is effects. Before to that, I will show you a lovely video so that you should understand. Poles. What do you want to do? Can I help you? What is that? Tell me. By typing in the name.
and you won't be comfortable. कब से मेरा कंफर्ट कर रहा है तू अपना पढ़ाई को अच्छे से करने का देख तू है ना इतना अच्छा लगता है ना पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ कर पढ़ाई भी करता हूँ सर 19 मार्क्स in geography आउट ऑफ 45 out of 20 वो पहले बोलना वेरी गुड कॉपी तो नहीं किया नो सर नो कॉपी अकेला तो बैठा था पूरे It's like somebody told me, sir, I won the gold medal in the 400 meter. I was very good बेटा. Sir, मेरा मतलब कितना लोग भाग रहा था, मेरा अलावा कोई नहीं भाग रहा था. सर बट इधर मैं अकेला था वो ज्यादा अच्छा था. क्यों? मैं अकेला तो था, कॉपी नहीं कर पाता. क्या लगी है तेरे? सर पट्टा बांध के तुझे चलते लेते बांध देने का. चलते नीचे चल. ये ऊपर वाला था. ये भी नहीं था. ये था. Lawless effect. The sun. ये भाषा है. Let us learn rotation and revolution of the earth and its effects. The spinning of the earth around its own axis, which is an imaginary axis, is known as rotation of the earth. Now, this axis is tilted at an angle of 23.5 from the vertical. And with this tilted axis, the earth revolves around the sun, and that is known as revolution. So these are the two important motions of the earth, that is rotation and revolution. The axis of the earth is an imaginary line passing through the center of the earth as it does on the globe. The two endpoints through which the axis passes is known as North Pole and South Pole. The axis is tilted at an angle of 23.5 from the vertical. This means that if a line were drawn parallel to the plane of the Earth's orbit, the Earth would make an angle of 66.5 degrees to this line. Now let's understand the characteristics of rotation. The first one is direction. The Earth completes one rotation from west to east on its axis in 23 hours, 56 minutes and 4.09 seconds, which roughly comes to 24 hours. There it is, inclination of the axis of the Earth. The Earth is always tilted in the same direction. That is, it is pointing towards pole star. That is, its north pole is pointing towards pole star as it is moving around the sun. Third is the speed of the Earth's rotation. The speed of the Earth's rotation at the equator is 1,670 kilometers per hour because the circumference of the Earth is 40,070 kilometers. So at the equator, the Earth would be traveling 40,070 kilometers and it is covered in 24 hours. So in 1 hour, the Earth rotates 1,670 kilometers per hour. So if we sum up the characteristics of rotation of the Earth, it is the Earth completes one rotation from west to east on its axis in 23 hours, 56 minutes, 4.09 seconds. That is roughly 24 hours. The Earth is always tilted in the same direction as it is moving around the sun. And the speed of the Earth's rotation at the equator is 1,670 kilometers per hour. Now let us learn the effects of rotation. The first and the important effect is that day and night are caused by the rotation of the Earth on its axis. This is because a part of the Earth faces the sun and it has day, and the other part which does not face the sun has night. And this happens with precision and progression and not suddenly. So I will say this happens accurately and gradually. It does not happen. The time when the sun begins to cast its light in the morning is known as dawn. At noon, the sun is overhead, and dusk, that is in the evening, we see the twilight. Twilight is the light that we see after the sun sets. So here, the sun is disappearing in the sky. At night, we all know it is so beautiful and completely dark. The duration of the
and night is not equal at all the places on the earth. This is because of the inclined axis of the earth. If you look at the important latitudes on the earth, it is equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, and the Antarctic Circle. Now, if you see the lines carefully in the southern hemisphere, you will understand that the duration of night is longer, and in the northern hemisphere, the duration of day is longer than the night. The reason is the northern hemisphere is facing the sun and the southern hemisphere is facing away from the sun. But if you look at the Arctic Circle and Antarctic Circle, the Arctic Circle is completely in day. So when the Earth is rotating, the entire region beyond the Arctic Circle will have day. There the sun will not set. Whereas in the southern hemisphere, beyond the Antarctic Circle, you will see it is completely dark. And here the sun will not rise. The length of the day varies with respect to even seasons as well as latitudes. So the length of the day varies with respect to latitude, but also seasons, and we shall be learning about them gradually. Then it is the sunrise and the sunset. This happens because of rotation of the earth. Then it is the Coriolis effect. Now we all know that the earth is spinning at a great speed. And the equator is 1,670 kilometers per hour second. We have learned that because of the spherical nature of the earth, different part of the earth receives different amount of sunlight. So there is difference in temperature at different places. Because there is difference in temperature, there will be difference in pressure. Some places will have a high pressure and some other place will have a low pressure. And because of that, the wind moves. The wind always moves from a high pressure area towards low pressure area. Now, when the wind is moving on the surface of the earth, the wind bends. The wind bends because the earth is rotating at a great speed. In the southern hemisphere, the wind will bend towards left. And in the northern hemisphere, the wind bends towards right. Now, when you look at these arrows, it is very clear that they are bending towards left. But when you're looking at these arrows, it will appear as if they are also bending towards left. But for the arrows in the south, you will be looking from the southern end. Similarly, for the arrows in the northern hemisphere, you have to look at it from the northern end. Then you will see that they are actually bending towards right. So the wind in the northern hemisphere always bends towards right. And in the southern hemisphere, they bend towards left. But in the equatorial region, that is region between 5 degrees north and 5 degrees south, the wind does not bend. These are the regions of doldrum, or we say these are the regions of calm, and these are the regions of low pressure. The next important phenomena that we see is the sun, the moon, and the stars seems to move from east to west. Now you may say that you have seen sun moving from east to west. What about the moon and the stars? But actually, if you see in time lapse, you will understand that they all are moving from east to west. This is because the earth is spinning from west to east. Now, this effect is similar to what one experiences while sitting in a train and looking out the window. What do we see? We see the trees and buildings and everything moving in the opposite direction to that of the train. The reason is the train is moving at a very great speed. The same happens with the earth. When you look at the sky, it appears as if the sun, moon, and the stars are moving, but actually the earth is spinning on its imaginary axis. Then the earth also generates centrifugal force. Centrifugal force is a force that is generated from the center towards the periphery, that is towards the edges. This is because the earth is spinning at a very great speed. It is the same effect that we see every day in our kitchen when we are operating a mixer. All the chutney will come and stick on the edges of the glass. And this is the reason that along the equator, there is a bulge in the earth, and the earth is said to be geode shaped. Then rotation also causes difference in time, because when the earth is spinning, some part of the earth has day and some other part has night. Some part of the earth, there is sunrise happening, and somewhere else the sun is setting. So different part of the earth will have different time. Then the short rotational period makes the variation of temperature between day as well as night moderate. So neither day nor night is extreme, it is moderate. The rotation revolution also causes seasons and variation in the length of day and night, and we are soon going to learn that. So let us summarize the effects of rotation. The effects of rotation are occurrence of day and night, sunrise and sunset,
Coriolis effect. The sun, moon, and the stars seem to move from east to west. Centrifugal force, rotation, and we have seen rotation causes difference in time. And the last one is the side of the earth. Now we have Out of 7 points you asked me, any of the point you don't understand? Third one. How about others? All good? Any idea what is that Coriolis he was explaining? Yes. What is that? Coriolis. It is the rotation of the earth in such a speed, if any winds or anything comes and hits, instead of moving in that correct direction, it will take a U-turn. That is nothing but हमारा जो south east winds है, instead of going towards east, due to the rotation of the earth, it comes into west. उसीलिए हमको rainfall मिलता है. Sir, what is the distance of the total equator? That is the circumference of the earth. How much? उसने एक बड़ा नंबर बोला ना, शायद वॉल्यूम में है 44,000 समथिंग मेरे को. It is 40,077 किलोमीटर. तो ऐसा याद रखने का 40077. इसीलिए ये इतना स्पीड में घूमता है. एक काम करो, put the heading in your notebook. Effects of rotation ये कॉपी कर लो. ये सारे. हाँ, only the summary. फिर हम लोग रीड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. फिर रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे. Yes, sir. All good with you? It seems to be something missing from your head. वो तो पहले से नहीं था. अरे right my dear. Yeah. All 7 points. The time you are scribbling. Sir, true. आप इससे भी बड़ा कॉम्पिटिटर लगता है. जब तक तो यही अकेला दिखाई दिया. Yes. You know, switch off the both of them. वो ऐसे भी चलता है. भी 4 लोगों को सर में कुछ पत्थर डाल के कर rotation. She is very correct. Don't take it something personal. No. Syllabus के है क्या? But I should compliment you guys compared to my 10th. At least you know each and everything what is happening in the news. Yes. In fact, day by day इससे आगे गया वो plane आया ये plane. और जो भी वो पाकिस्तान न्यूज़ है, it is not correct. They are just doing कुछ भी फालतू फेंकते हैं. नहीं सर, पाकिस्तान का न्यूज़ कुछ भी बोल रहा है. लोग ने तो इतना भी बोला कि they have shot down R2 aircrafts. तो फिर हम लोगों ने बोला कि हमारे एयरक्राफ्ट उसका एलओसी में गया ही नहीं, पार ही नहीं. हाँ, आप लोग का ऑटोमेटेड मिसाइल्स जो है. क्या क्या करते दोबारा कौन? ऑटोमेटेड मिसाइल्स. वो क्या होता है? They know that route. किधर से किधर जा रहे हैं. उसको कहाँ कर देते हैं? ड्रोन है. मिसाइल्स नहीं. एक बार टारगेट लॉक करके छोड़ दिया ना, वो जाके खुद मारेगा और उसको मरवा के आएगा. वो सेल्फ सुसाइडिंग ड्रोन्स. हाँ, मैं इसका मन करता हूँ. Yeah. I know the chapters थोड़ा ये रहेगा. थोड़ी हाँ, मैंने वर्ड बोला नहीं तो बोल दिया. But I'm trying to make it by putting some videos है ना. Giving some real life example. जो उधर कोने में बैठा है उसके बाद में. आप लोगों का स्कूल का एग्जाम्स कुछ डिस्क्लोज किया है आफ्टर जुलाई. मेरा एवरीबॉडी जून second June से revision टेस्ट है. एंड ज्योग्राफी में हम चैप्टर
What chapter? No, because anybody has given certain examples जो मैं नहीं दे पाया तो बोल दो. So that it is easy for me to give the chapter this one. Test. No, not test. I need to finish the portion first. No? पहला exam कौन सा? इंग्लिश है. इंग्लिश का पता है? मेरी जो दूसरी वाली मैम है इंग्लिश की मैंने कुछ पढ़ा है. इसी मतलब. हाँ. Shall we go ahead? Sujan quickly. मुझे अभी ये आधे घंटे में chapter finish करना. I've seen that the Earth is spinning around its own axis, and this axis is tilted. With this tilted axis, when the Earth revolves around the Sun in an elliptical orbit, that is the orbit that appears like an ellipse. Ellipse means an elongated circle. So when the Earth is revolving around the Sun in an elliptical orbit, we call it as revolution of the Earth, and this leads to various phenomena. The Earth moves at an average speed of 29.8 kilometers per second, or it is easy to remember 1 lakh kilometers per hour. So Earth is spinning at a speed of 1670 kilometers per hour, and the Earth is revolving around the Sun in an elliptical orbit at a speed of 1 lakh kilometers per hour. Now if we see the revolution, the Sun is not exactly in the center of the ellipse. Because it is not in the center of the ellipse, the Earth, when it is revolving around the Sun, there are times when it is closer to the Sun, and there are times when it is far away from the Sun. When the Earth comes closer to the Sun, that time the speed of revolution around the Sun increases. And when the Earth is away from the Sun, the speed of revolution reduces. This is mainly because of the gravitational force of the Sun. Now, the Earth completes one revolution around the Sun in 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 45.51 seconds. But we roughly take it as 365 days and 6 hours. Now, to adjust this 6 hours, we have the concept of leap year. And leap year comes once in 4 years. So, on the 4th year, February, instead of 28 days, we have 29 days. And in this way, we adjust this 6 hours. Let us learn the effects of revolution of the Earth. The first effect is the seasonal changes. Because of the revolution of the Earth, we have in the first phase summer, in the second phase rain, in the third phase it is retreating monsoon, and in the fourth phase it is winter. Now how does this happen? Suppose we take these 4 positions of the Earth. In the first position, the date is 21st of March. In the second position, it is 21st of June. In the third position, it is 23rd September. And the fourth position is 22nd December. When the Earth is in the second position, if you look carefully, the northern hemisphere is facing the Sun. And when the Earth is in the fourth position, the southern hemisphere is facing the Sun. But when the Earth is in the first position or in the third position, none of the poles are facing the Sun. Wait, I'll explain what he is doing this Takluma very detail. ये दोनों हमारे लिए इक्विनॉक्सेस है. हाँ, ओके. है ना? एंड ये दोनों हमारे लिए सॉलिस्टिस है. सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ. ये दोनों हमारे लिए, this is summer solstice, this is winter solstice. Whereas these two are equinoxes. Correctly saying or ulta saying? Correct. So 21st June and 22nd December. But this one 23rd, I think 23rd. 21st March. 21st March and 23rd September. चलो ये डायग्राम उधर वॉल्यूम में दिया है. Come on, make the diagram. Easy होता है. पूरा चैप्टर ही और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा. ये वाला. हाँ वो पेज नंबर 29. Come on, make the diagram. And dates जरा careful रहना. Don't get confused. Just coming in 1 minute. Going to the office. मैं चिल्लाती हूँ. टीचर को क्या प्रॉब्लम है मेरे चप्पल से?
Looking at the AC. Yeah, bidirectional. Who had that? Who used to be now? Yesterday it was heavy rain, right? Here. Yes, sir. Since 2 days. अभी देखो ना माहौल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को मार रहा है और हम लोग रो रहा है. It's cold. That's what. वो टीटीपी और वो कौन है डीएलए तो छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को. They want this opportunity. Careful with the dates. Very Yes, sir. careful. Yes, sir. Because this equinoxes and solstice surely exam आता ही है. Fast. Everyone please 1%. Because I want you to understand this as crystal, as clear water. Play that video, play that video. अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा. क्योंकि अभी आपने वो The diagram बनाया. inclination of the Earth's volume axis कम करो. does not have any impact on the sun rays that it receives. So on 21st of March, vertical rays of the sun falls on the equator and the entire Earth has equal day and equal night. But as it is moving from the first position to the second position, slowly the northern hemisphere tilts towards the sun. So in the northern hemisphere, the days become longer and the nights become shorter. And this gives rise to summer conditions. And we say in this phase, it is summer in India. On 21st of June, the vertical rays of the sun falls on the Tropic of Cancer. This is the maximum inclination of the Earth's axis of the northern hemisphere towards the sun. And this is referred to as summer solstice. As we come to the third position, once again, the day and night are equal. And in this case, India experiences rain. When the Earth comes to the third position, entire Earth has equal day and equal night. And as we come to the fourth position, the date is 22nd December. The southern hemisphere is facing the sun, and the vertical rays of the sun falls on the Tropic of Capricorn. And this is the time the northern hemisphere experiences winter solstice. Now, when I'm explaining these two positions, understand very carefully. This is my North Pole and South Pole. If I draw the line, ऐसा, है ना? What was the scale I kept? वही लेने का था भूल गया. Anybody having a plastic scale? तो जाना. वो मेरा bag. Good. Actually, the already video. Maximum part of the sun is receiving the Earth is receiving the light. Here, like this. Okay. So now this is winter solstice because ये जो part है which is not facing the sun will have winter. Okay. And the part which is facing the sun will have summer. Similarly, the part which is facing the sun will have summer. So this is for India. In India नहीं है. अरे कौन सा country उस time पर उस जगह पर है we do not know. But we are talking about the entire Earth. अभी इसमें कहीं भी इंडिया आया है क्या? तो suddenly क्यों भाई इंडिया को अंदर घुसा रहा है? Because rotation and revolution का time है अलग-अलग है. Understood? So this is called as winter solstice and solstice. This is summer solstice. And ये दोनों हम लोग क्या बोल रहा है? ये entire Earth का जो heat, sun का heat है वो पूरा Earth पे गिरेगा. So that is why we say ये जो part है which is facing the sun, 12 hours day, 12 hours night. This part 12 hours day and 12 hours night.
Clear है? Play कर दो. justice. So the first and the third positions are referred to as equinox. Is equal day and equal night. उधर लिखा है कि equinox. Exam एक मिनट भूल कर. And Everyone write the word equinox down. Only 2 days of the year wherein Earth experiences equal hours of day and night. 23rd September And 21st June. June है ना? Yes, sir. And अभी वो second लिखो. and third. हाँ अभी वो लिखो. Winter and summer solstice. और अभी ये मैं नहीं दूंगा कॉलेज में ढूंढो. Which is March 21st and हाँ December. बट क्या है solstice का मीनिंग अभी उस बंदे ने बोला आप लोग दोनों ने नहीं सुना दोनों क्या Winter solstice. हाँ बट क्या होता है उधर है बोर्ड में है वॉल्यूम में है प्लीज चेक इट आउट एंड लेट मी नो. Experience is equal. हाँ solstice का मतलब ये है. अरे नहीं इधर equinox नहीं. हाँ equal days and equal hours of day and equal hours of night. Yes, sir. If India is attacking again Pakistan with some drones. Peace. Right say कुछ अपने हर रोज की गाथा है. नहीं वो चुप ना बैठेगा कुछ करेगा. पाकिस्तान. उसको आपको क्या लगता है कितना जल्दी हार मानता है. मुंबई में करेगा. लॉट ऑफ कीड़ा है मरने के कीड़े. उत्तराखंड catfish is next target. Yeah, we are waiting at, but I definitely nobody wants a very elongated detention. जल्दी करो. जल्द से जल्द आओ. पाकिस्तान को मिट्टी में नहीं लगेगा. वो अभी अपना ज्योग्राफी कमेटी में मिला. मिट्टी में मिला दूँ. But that is also geography, right? Yeah. हाँ ठीक है बट अभी तो इतना छोटा है अभी नहीं चाहिए यार. That's history actually. अभी geography. There is one battering system. I don't know how many of you understand called AS400 जो हम लोगों ने रशिया से मंगा के रखा है. मैं आपको दिखाता हूँ. After the break you will let me know. One of the best AS400 ने पकड़ा तो मारा कुछ आगे में मार दिया. वो इंडिया के तरफ डालेगा कुछ ना कुछ चुप नहीं बैठेगा. पर वो protection system रशिया ने दिया. Pakistan killed 10 Indians at Kashmir border. वापस अभी. हाँ वो तो heavy firing चालू ही रहता है. बट वो हमारे तरफ घुसना नहीं चाहिए. आप ये मत है ना कि हमारा radar system is very powerful as compared to Pakistan. But you never know. क्या बोलते हैं ना डूबेगा खुद भी और आपको डुबा के जाएगा. तो ऐसा पागल लोग. इंडिया मतलब रेडी स्टैंड में अभी भी है because it is predicting कि कुछ ना कुछ करेगा. तो इंडिया सीट लाहौर ना. अगर पाकिस्तान ने कुछ किया ना तब USA would also take part. नहीं USA डायरेक्टली नहीं आएगा. USA will fund it. He would try and take part because already उसने according to his दो speech, वारशिप उसने इंडियन ओशन में ऑलरेडी डाल के रखा है because China will do some नौटंकी करेगा China. स्पीच को देख के तो कुछ अलग ही लग रहा है. Poor people of Pakistan are running left and right. इतने भी छोड़ दें उनमें भी कुछ कम नहीं है. They are also very नौटंकी. क्या बोलते हैं लागी लगा इकला हमारा कश्मीर का नाता क्या है लेकर ही मरेंगे. लेकर मरना है तो मरो ना डायरेक्ट. हमारा कश्मीर को डिस्टर्ब मत करो यहाँ बच्चे को. एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ना वो है कौन सा है अपना हॉटस्टार वो देखना पूरी नॉट ओटी यार. surgical. नहीं
Who was in Searchlight. Surgical strike. Yeah. And आगे भी है ऐसे कुछ. मैं normally ये सब नहीं देखता हूँ. आप मूवी नहीं देखते? जो दूध की बात है. रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड. सर मिल गया सॉलिस्टिस. बालाकोट एंड बियॉन्ड है. इट्स टू गुड. बहुत अच्छा लिखा है. Bala what? बालाकोट. उन्होंने जब बालाकोट अटैक किया पाकिस्तान पे एंड बियॉन्ड. अभी तक तो 9 प्लेसेस पे अटैक हो चुका है. 12 प्लेसेस अंदर. नंदी सी जान में इतना जानकारी कहाँ से स्टोर करता है. न्यूज़पेपर. तू पढ़ता. डोंट टेल. यू रीड न्यूज़पेपर्स. यस. कब से ये गंदा आदत तेरे में लग गया. कौन सा है. बोल. अभी वो नहीं. अभी टाइम्स ऑफ इंडिया. पहले. हाँ पहले पेज पे ही है. यार पहले क्या पढ़ता था. पहले तो यही पढ़ता था. पहले से ही मैं शुरुआत से यही पढ़ता हूँ. कब शुरू हुआ तू. 1 year or so. ज्यादा नहीं. सोने का पहले शुरू हुआ. हाँ वो नहीं पूछ रहा हूँ. हाँ सर. There is one more paper called The Hindu. Yes. हिंदुस्तान हाँ. टाइम्स. नहीं. नहीं ये हिंदू नहीं पता. पेपर का नाम ही The Hindu है. नो आइडिया. बट कल उसने कुछ इंडिया के खिलाफ उल्टा पुल्टा छाप दिया. हाँ हाँ वो लोग कभी नॉट करते रहते हैं. किसका? The Hindu. हिंदू लिख के इंडिया के हिंदू इसका नहीं. वो हिंदू नहीं जो उसको समझ रहा है. तो वो पेपर है ना. जब मैं IAS एग्जाम दे रहा था आई वाज फोर्स्ड बाय माय डैड टू रीड इट. हाँ जो मैं नहीं किया. रीड तो क्या. मैं तो एक भी दिन शायद बैठ के मैंने IAS के लिए तैयारी नहीं किया है. फिर भी मेरे में एक कॉन्फिडेंस था. तो क्यों. क्योंकि दैट टाइम आल्सो आई वाज अ फुल फ्लेज्ड टीचर एंड आई अंडरस्टूड कि बेसिक जनरल नॉलेज ही रहता है ना. हाँ. बट इतना डिफिकल्ट पेपर था ना. IAS. हाँ एंट्रेंस. IAS गधा. अरे मैं अच्छा. तो क्या हो गया. Out of 100 question, I still remember I could only tackle only 56 question. Already आधा घंटा लेट. मैं इधर वाशिंग में था. मैं बीकॉम को लेक्चर्स लेता. पीटी में था मेरा सेंटर. सबसे बड़ा कॉमेडी तब आया जब मेरे पीछे एक लड़का बैठा था जो 2 साल से IAS के लिए तैयारी कर और कॉपी मेरे से कर. कॉपी किया तो किया. बाहर आने के बाद मेरे से पूछ रहे भैया आपका पेपर कैसा रहा. मेरा छोड़ तू बता. मेरा तो अच्छा है ना. आपसे देख के तो फिर मैंने बोला यार कहाँ से नहीं क्या है और क्या कुछ नहीं. 2 साल से दिन रात तैयारी करता. फिर उसने मेरे से पूछा आपने पूरा मैंने क्या पढ़ाई नहीं किया. फिर भी आके लिख रहा था. तो मेरा फैमिली वाज वेरी हैप्पी. when that result was displayed, मेरा नाम का 4 रोल नंबर के आगे 4 रोल नंबर के पीछे नाम नहीं ओनली इस नंबर है. मेरा नहीं. और मैं बार-बार मेरे भाई अच्छे से ढूंढ अभी क्या फाड़ के लेकर आके दूं क्या. तेरा नंबर ही नहीं है उसमें. तो सो क्या हो गया. मैं तो ऐसे धोखा मार रहा था ना. एंड इधर एक कमिश्नर रहता था बेलापुर में. कुछ अलग काम से गया था तो उसको मैंने ऐसे बात करता था. मैंने बोला आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम. तो मैं सब बुक सब देता था. फोन करके पूछता था पढ़ाई कर रहा है. मैंने बोला यार इसको कैसे बताऊं कि मैं पहले फेल हो गया. एंड उसका फिर ट्रांसफर हो गया. So why I'm narrating this incident now when you guys are preparing for your any exams ना give it a shot. UPSC दिया. मेरा पापा ने बोला ये क्लासेस वगैरह छोड़ नहीं इसके साथ ही करूँगा. देखते हैं कि कितना बेटे. Because I was very confident कि at least entrance clear करूँगा. उसके आगे तो मैं सब कुछ बंद कर देता. तो मेरा पापा ने बोला एंट्रेंस में बहुत लोगों को लात पड़ती है और तुझे भी पड़ी है. ठीक है. और एक बार ठीक है. और एक बार देने के लिए मेरा मेंटल सेटअप ही नहीं. सब बंद करना पड़ेगा. और ये हिंदू मेरा पापा रोज लेकर आते थे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखने का. आप लोगों को क्या लगता है. यू डोंट नो द न्यूज़पेपर नेम इज इटसेल्फ इज द हिंदू. एक्चुअली एक टाइम पे वो पेपर बहुत अच्छा लगता था. ये कचरा हो गया.
तो पढ़ाई किया क्या उसका? नहीं, आप बोले ना। ना अभी उसने अभी ये स्ट्राइक के ऊपर ही कुछ उसने उल्टा पुल्टा लिखा। कौन सा स्ट्राइक? ये इंडिया पाकिस्तान का। और पहला जब वो मोदी के ऊपर भी लोग ने यही किया ना, तभी भी उसने कुछ गड़बड़ की है। तो मुझे लग रहा है अभी उसको कांग्रेस अभी फंड कर रहा है। जैसे एवरीबडी नोज दैट रिपब्लिक इज फंडेड बाय दिस वन ना, डोनाल्ड ट्रम्प, इलॉन मस्क। मोदी गवर्नमेंट। डोनाल्ड ट्रम्प से लिखा। अर्नब का क्या संबंध डोनाल्ड ट्रम्प से है क्या? चलो अंबानी। भाई करोड़पति, हम तो उसके क्या बोलते हैं, इतना भी आ गया तो बहुत हो गया। इफेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन, प्लीज रीड इट एंड चेक विथ मी एनीथिंग। इंक्लिनेशन भी कर लिया हम लोगों ने। ब्रेक अ लिटिल अर्ली। क्यों रे? क्यों बता? थैंक यू। नॉट अ ओके सर। I काम करो, I'll try. Do question number, page number 27. Effects we have already written on the notebook. Please check. Yes, I'll give sir. you. Please check. If you want any notes, I'm ready to give. Okay. If not, mark. You only mark day and night, rotation and revolutions that you can mark, and let me know. Because self-marking will create a self-impression on your own self. Mark it. What are you looking at that? I'm only standing here. ये कुछ 10 के नहीं सर, आपको उधर देखने में अच्छा लग रहा है। इधर आमने सामने खड़ा, इधर नहीं उधर देख रहा। Yes, I बताऊं? that is always not understandable. Yes sir, can you please come here? Yeah, why not after 15 minutes? बोल क्या चाहिए? Yes sir. इधर ब्रैकेट क्लोज किया है बट ओपन किधर गया? इधर देख। It is not equal all places on the earth because of the inclined axis. The length of the days varies with respect to season as well as, ये तो गलत ही नहीं है कुछ भी। फुल स्टॉप लिखना हाँ, रहेगा। वो जगह थोड़ा सा ऐसा बोल रहे जैसे कि एक माइन्यूट पॉइंट पे तू ब्रैकेट और फुल स्टॉप सर। It's okay, you read now. बात करो। Wasting of the time, you can do it better. और इसी पे there. Now the more you do the time pass, next lecture में अभी उतना ही drilling होने। सर हो गया। मार्किंग डन। Next भी है ना inclination of the earth, जो भी करना है। वो एक ही वीडियो में सब कुछ आ गया। वैसे भी ये पाकिस्तान के साथ क्या होगा करके ना, Nostradamus, if you don't know, and plus one American journalist, astrologer has already predicted. Maybe in a few years down the lines, there will be no country called Pakistan on the world. ऐसे भी अभी 5 टुकड़े में टूट जाएगा। बल्तिस्तान, गिलगित। 5 महीने की 7 दिन। वो अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मैं ये 5 महीने। सर आई एम जस्ट आस्किंग कितना टाइम लग सकता है? देख, एस्ट्रोलॉजर तो दो ही चीज बोलेगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, बट अपने को थोड़ा पेशेंस रखना है ना। अभी जैसे एग्जाम लिखने के बाद डू यू गो टू द एस्ट्रोलॉजर वेदर आई विल फेल और पास, एंड ऊपर से एस्ट्रोलॉजर ने भी हाथ देख के बोलते तो फेल हो जाए। उन्होंने किस बेसिस पे बोला? उसके हाथ में कुछ इंक मार्क की नहीं, तो जवाब मदद। क्योंकि जब पढ़ना लिखने वाला बच्चा देखा पूरा बॉडी में ये ऐसा थोड़ी लिखता है। तो astrologer, even I am a true believer, but to certain extent ये न्यूक्लियर बम बोल रहा है, अगर एक भी न्यूक्लियर बम एक्टिवेट हुआ ना, इज रियल ट्रबल फॉर इंडिया। क्यों?
मतलब सर गुजरात उसके से उसके वजह राजस्थान से से तो पाकिस्तान भी चले जाएगा। नहीं जाएगा, एक कोस्ट निकल जाएगा। बट शायद जब ये तो प्राइम मिनिस्टर तो मोदी तो इज वेरी स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू एबी वाजपेयी, आई कैन रिमेम्बर हिज स्टेटमेंट। उसने बोला अगर जो एक मिट्टी में nuclear मिला bomb डाला देंगे। ना, हाँ ये तो अभी ना, उसने बोला पूरा पाकिस्तान नक्शे से मिटा दो, क्योंकि अपने पास उतना न्यूक्लियर पावर। एक्चुअली हाँ फिर वो करेगा क्या, करेगा क्या सर, रहेगा तो ना कुछ करेगा। अकेला रशिया ही कर पर अगर यूज कर भी लिया तो फिर इंडिया But it is against the nuclear proliferation theory, NPT ऐसे तुम बोलते है। हैं सर मुझे वही डाउट था, वो होता क्या है? क्या? वो हर एक कंट्री जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है उसको साइन करना पड़ता है कि he will never use a nuclear bomb in attacking the other country। तो फिर न्यूक्लियर बम बनाते बने क्यों? बिकॉज रशिया बोलने की हाँ सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब तो रशिया के पास है, और अपने पास 7000 कुछ है उसके घर पास। पर सब कुछ फाड़ के फेंक देगा वो। नहीं वो रखते हैं। That is why that समाज I am going ना, they keep saying एक्चुअली रशिया के जस्ट रिमूव ऑल द कंट्रीज, क्यों? उसने अगर पावर यूज की अपनी न्यूक्लियर तो पावर। क्या पुतिन का वो है क्या, हमेशा गुणगान गाता रहता है? सर आई एम जस्ट What you are just छोटा सा knowledgeful बंदा।